Good morning, my dear students. Welcome back. So, we were discussing about human resources. We discussed that what is the mean of population, what is population size, what is population distribution, and after that the different kind of characteristics of Indian population according to census of 2011 related with the size and distribution of Indian population. Now the next point that we are going to discuss here is related with population density. Before discussing any data, before revealing any data about this concept, first of all I would like to explain you what do you mean by population density. यानी सबसे पहले ये समझना है कि population density होता क्या है. Population density एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, the total number of people living at a particular area, or we can say that the total number of people living in per square kilometer area. यानी जब हम ये कहें कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या, तो वो कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी. मीन टू से दैट अ प्लेस विच इज इन a square means the total density from distance from this point to this point is 1 kilometer, and from this point to this point is also 1 kilometer. So in this way the total number of people living in per square kilometer area is known as the population density of that particular place. In this way we can explain it in the form of a formula. Mean to say that population density is equal to total number of people upon per square kilometer area. यानी population density या जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या. Clear guys? Now the next point, population density of India, means as we know that the latest census related to the population calculation of population of India is census of 2011. So according to the census of 2011, the total density of India is 382. Okay, after that the next point is, means we are discussing here about the average density. So the average density of India or of the Indian country is 382. After that the next point, which state is having the highest population density and which state is having the lowest population density. So if we will say discuss about the highest population density, then we can say that the highest population density in India is present in Bihar. And now the next point is the lowest population density. So the lowest population density of India is present in Arunachal Pradesh. Clear guys? Highest population density is in Bihar, which is 1104 persons in per square kilometer area. And the second point is lowest population density, which is in Arunachal Pradesh, that is 17 persons in per square kilometer area. So first thing that I would like to make clear in your mind is that when we are discussing about the population density, then it does not mean with the rank of that state in population of that country. Mean to say that highest population in India is present in UP, but हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ इन स्टेट. यानी कहने का मतलब ये है कि यदि एक स्टेट जो पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक पे आता है, ज़रूरी नहीं है कि वही स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी में भी फर्स्ट रैंक पे आए. तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में बिहार में है, विच इज़ 1104 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश, विच इज़ 17 persons per square kilometer. Now the next point, as we know that about Rajasthan also we are having the census data of 2011 census. So first of all, according to the census of 2011, the population density of Rajasthan is 201, and in 2000
2001 it was 165 persons per square kilometers. Okay, persons per square kilometer, and in 2011 it was 201 persons per square kilometer. So in this way there is an increase of nearby 36 persons in 10 years. Means in 2001 it was 165 and in 2011 it is 201. So it means there is an increase of 36 persons in per square kilometer according to the census of 2011 in the population density of Rajasthan. Now the next point, as we discussed about the highest populated state of India and the lowest populated state of India, here we are going to discuss about the highest population density containing district and the lowest population density containing district. Here I would like to remind you that while we were discussing about the total population of Rajasthan, we discussed that the highest population in Rajasthan is present in Jaipur. In the same is here, means the highest population density is also present in Jaipur. यानी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला जयपुर है और राजस्थान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला भी जयपुर है. So there are two concepts present in one district. Okay, and here nearby 598 persons in per square kilometer are residing. Now the next point is lowest population density. So if we discuss about a particular district, then in Jaisalmer the lowest population density is present in Rajasthan, which is 17 persons per square kilometers. So mean to say that highest population density district is Jaipur, which is 598, and lowest population density district is Jaisalmer, which is 17 persons in per square किलोमीटर. यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट जयपुर है जिसमें 598 पर्सनस रिसाइड करते हैं और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर है जिसमें लगभग 17 पर्सनस जो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि जैसलमेर में सबसे कम क्यों है, और जनरली इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो एरिया के बेसिस पे डिसाइड होती है. तो राजस्थान में जैसलमेर जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसी वजह से राजस्थान में जैसलमेर की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाई higher number of people are living in the northern plains and why there is a presence of low population density in the states of in the states of peninsula region of India, Assam, means we can say that in the northern hill areas. So what is the reason behind that? So a very simple reason why there is a high density in the northern plains, or we can say that in the southern states like Kerala. So a very simple factor is that there is a presence of flat plains and along with fertile soil. यानी आप ये कह सकते हो कि जनरली उस एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं जहाँ पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है. एज वी नो दैट इंडिया is a country which is depending on agriculture mostly, means still in India nearby 50% people are depending on agriculture activity can be performed in a better way in the areas where we can find flat lands with fertile soil, and both these things are present in the northern plains. That's why there is a presence of high population density in the northern Indian states. For example, highest population density of India is in Bihar, which is related with the northern plains. यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्दर्न प्लेन्स में है, और नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने का जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि इन एरियाज़ में फर्टाइल सॉयल और फ्लैट प्लेन्स प्रेजेंट हैं. फ्लैट प्लेन्स की वजह से इन एरियाज़ में
ट्रांसपोर्ट सेक्टर वेल डेवलप्ड है। इसके अलावा इन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ भी इन क्वांटिटी ज़्यादा है, और इसके अलावा फर्टाइल सॉइल होने की वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी इन एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, so these are the major factors responsible for high population density in the regions of northern plains। यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में या उत्तरी मैदानों में जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इन एरियाज़ में फ्लैट प्लेन्स हैं और उसके साथ में फर्टाइल सॉइल प्रेजेंट है, और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से इन एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बेटर वे में यानी वेल डेवलप्ड हैं, इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं, और इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी बेटर वे में परफॉर्म होती हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट। आफ्टर दैट, on the other hand, we are having a low population density in the regions of Assam and other peninsula states. So why there is this kind of situation present there? Actually, the reason is in these areas hilly hills are present, rock cut land is present, low and medium rainfall areas are also included in this region, and along with that there is presence of less fertile soil. Means some areas are having medium rainfall, low rainfall. Along with that, these areas especially containing mountain regions, hilly areas, or rock cut land, and all these kind of factors are responsible for the presence of low population density। यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि हमारे इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने का रीज़न वहाँ की फ्लैट प्लेन और फर्टाइल सॉइल है, जबकि दूसरी साइड में जब हम देखते हैं इंडिया के वो स्टेट्स जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, स्पेशली इन दी पेनिनसुलर स्टेट्स एंड इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न हिली एरियाज, स्पेशली इन असम, अरुणाचल प्रदेश। तो व्हाट इज़ द मैन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यानी इन एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों है? तो सिंपल सा फैक्टर ये है कि ये सारे एरियाज जो हैं वो हिमालयन माउंटेन रेंज कंटेनिंग हैं, स्पेशली नॉर्दर्न हिली एरियाज़। इसके अलावा बाकी के जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में भी सिचुएशन कम ओबेस बिल्कुल ऐसी ही है, और इसी वजह से इन एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। यानी यहाँ पे लोगों के रहने के लिए जो सुटेबल कंडीशंस होती हैं वो प्रेजेंट नहीं है, एक बेटर सिचुएशन उनको वहाँ नहीं मिलती, और इसी वजह से इन एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। Guys, as we all know, every coin has two aspects. It means to say that population is a gift of God for a particular nation, for a particular country। यानी किसी भी देश के लिए उस देश की जनसंख्या एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। यानी आप ये कह सकते हो, आउट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज द बेस्ट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स। यानी जितनी भी कैटेगरी के रिसोर्सेज होते हैं उनमें सबसे बेस्ट कैटेगरी का रिसोर्स जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स है। यानी मानव संसाधन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट रिसोर्स किसी भी कंट्री के लिए होता है। लेकिन एज वी नो दैट if a thing is in excessive situation then it can cause harm also। यानी यदि संख्या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। इन द सेम मैनर पॉपुलेशन कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अ पर्टिकुलर नेशन। नाउ द पॉइंट इज विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम पॉपुलेशन कैन क्रिएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन कैन अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। यानी किसी भी कंट्री की आर्थिक वृद्धि दर को पॉपुलेशन इम्पैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ हैविंग अ हाई पॉपुलेशन increasing rate, and because of this high population increasing rate the Indian economy is adversely affected। यानी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। द कंट्री विच इज़ हैविंग द हाइएस्ट population means the highest availability of human resources is still lagging behind in comparison of other countries। So what is the major factor responsible for the backwardness of Indian economy? A very important factor in this situation is population। यानी यहाँ सबसे बड़ा एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो पॉपुलेशन है।
उसके बाद में द नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्ट लिविंग स्टैंडर्ड, मीन्स द हाई पॉपुलेशन कैन ऑल्सो अफेक्ट द लिविंग स्टैंडर्ड, मीन टू से दैट high population, or we can say that a larger number of people will demand a larger quantity of resources, यानी जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ के लोग रिसोर्सेज की डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। और जब रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होती है, यानी जब आप ये कह सकते हो कि कम रिसोर्सेज को ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड किया जाता है तो वो उतना अच्छा रिजल्ट शो नहीं कर पाते हैं जितना कि उनको एक्चुअल में करना चाहिए, and in this way it affect the living standard of the people of a particular country if they are having a high population. Next, create scarcity, means because of high population, because of availability of larger number of people, it create different kind of scarcities, यानी अलग अलग कमी जो है, यानी डिमांड ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से बहुत से प्रोडक्ट्स की कमी इसमें रहती है। फॉर एग्जांपल scarcity of food, clothes, shelter, education and health facilities, mean to say that because of high population or a larger number of people are there in a particular country, a country is not able to provide proper food, clothes, shelter, education and health facility to its people, to its population. So in this way population adversely affect a country's economy, yeah, or we can say that it create a kind of problem for an economy by creating a scarcity of food, clothes, shelter, education and health facilities, यानी एक कंट्री के लिए, एक इकॉनमी के लिए ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इनकी कमी की सिचुएशन को। Now the next point, what is the next point? It boosts employment and poverty, mean to say that high population create a problem of unemployment, and unemployment is a major cause responsible for poverty, यानी आप ये कह सकते हो कि एक देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होना उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिमांड को ज़्यादा क्रिएट करता है, और एक कंट्री की इकॉनमी जो है वो उस इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा नहीं कर पाती है, एंड व्हेन people become unemployed they also become poor, यानी पोवर्टी जो है वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होती है अनएम्प्लॉयमेंट से, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लार्जर पॉपुलेशन की वजह से जनरली क्रिएट होता है। तो एक कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होना उस इकॉनमी के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। मीन्स पॉपुलेशन और ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ बूस्ट और इट्स अ बून फॉर अ कंट्री, बट it can also adversely affect a country if the population increasing higher than the demand or the requirement. Now the next concept about population which we are going to discuss here is literacy. So first of all, the first thing, what is literacy, यानी सबसे पहले क्वेश्चन जो अपने माइंड में आता है वो ये आता है कि लिटरेसी होता क्या है। सो according to census of 2011, any person, यानी कोई भी व्यक्ति, according to the census of 2011, any person completed the age of 7 years who can read, write and understand any language is known as literacy। यानी आप बात करते हैं लिटरेसी की तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है इसको हम लिटरेट रेफर करते हैं, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, एनी पर्सन कंप्लीटेड द एज ऑफ 7 ईयर्स, यानी जिसने 7 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया है, जो एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है या समझ सकता है, वो लिटरेट है, वो पढ़ा लिखा है, एंड दैट सिचुएशन इज़ लिटरेसी, और ऐसी कंडीशन लिटरेसी है। और जब बात लिटरेसी रेट की आती है देन वी कैन फाइंड आउट इन अ परसेंट मैनर, मीन टू से दैट द रेशियो ऑफ people out of टोटल पॉपुलेशन। देखो गाइज यहाँ पे
हम इसी डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हुए लिटरेसी रेट की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, हालांकि बुक में है नहीं, बट इट इज़ बेटर टू कीप इट इन योर माइंड कि लिटरेसी रेट क्या होती है। लिटरेसी का मतलब सिचुएशन, और सिचुएशन जिसमें एक व्यक्ति जिसने 7 ईयर्स केस कंप्लीट कर ली हो, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, किसी भी लैंग्वेज को समझ सकता है, तो वो लिटरेसी में आती है। लिटरेट का कॉन्सेप्ट आता है तो एक ऐसा व्यक्ति जो 7 ईयर्स केस कंप्लीट कर चुका है, जो कुछ पढ़ सकता है, लिख सकता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, वो लिटरेट है। और उसी बेसिस पे जब हम लिटरेसी रेट का पॉइंट देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं रेशियो या फिर परसेंटेज आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ratio of people out of the total population which can read, write or understand any language is known as लिटरेसी रेट। यानी जब हम रेशियो में बात करते हैं तो वो लिटरेसी रेट होता है। और जब हम ये कहें कि भाई लिटरेट क्या होता है, तो इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने 7 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली हो, जो पढ़ना, लिखना और समझना जानते एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, वो लिटरेट है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल गॉट माई कॉन्सेप्ट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब S.st. classes. This is only because when I will upload the next video, then you will get a direct notification by YouTube just by uploading. Whenever I will upload that, you will get a notification of that. So it means if you will subscribe it, then you will directly get a notification just after uploading the video. Thank you very much. Have a nice day.